Oh, Hi, Ishita. hello. So finally, we are all there. I Uh, did not receive your email. You said there was an email? oh, yes, yes. I did send you an email this afternoon. I wonder why. And that's why I thought, let me also inform you that we'll be Yeah, there for the call. So, but sorry for this. I mean, I feel bad that you didn't receive. it's Uh, okay. I'm not sure what happened, but we can still talk. okay. Thank you for accommodating on a short notice then. How is everyone doing? So I think it will be difficult for everyone to answer. But आप इमोजी से तो respond कर सकते हैं. How's everyone doing? इशिता मैम पूछ रही हैं. You can respond in the form of emojis. Going on well, ma. Okay. Well, Fine, fine, study. Fine. I'm good. It's great. So I I'll wish give you a brief introduction. आप देखो ना इधर देखो नहीं वैसे देखो So only if अगर आप बात करेंगे बात कर रहे हो तभी अपना माइक ऑन रखिए नहीं तो म्यूट कर लीजिए प्लीज. So I'll just quickly name the people whose organizations we have approached for this particular project. Anup is here from the University of Lucknow. Sandeep ji and Sanjay ji is here from People's Consultancy Services. Ravi Shankar ji is here from Karnataka. He is the Secretary Science Center. And Shweta ji is here. She's the president of the Women Led Science Club. And of course, from Caring Souls Communications, I have Amritanshu, who's the project lead for this particular project. And all the others are people who will be surveyors, who will be surveying. And we had a very brief meeting, Ishita, just to inform you that, we just gave them a glimpse, which is not enough because it was too short a notice. Our contract came through last evening. And so this today was a day where we were engaged in recruiting. And so it has Mhm. been a very, very brief kind of a meeting of setting the context, what the project is all about, what they need to do, what kind of data needs to be uploaded, how they are going to upload. So we've created the Google Drive links and we've created the folders and we've created the daily update templates and everything that needs to be done back end. And so we quickly showed it to them. But I think, organization wise, we will again be doing an orientation with them so that they get hands on. And so we've just asked them that, they will go through all the folders, they will go through all the written material that has been shared, and administer one form. At least every participant needs to do a dummy form before they can start calling. And we plan to begin this Sunday because 2 days we will need to coordinate with the field. So I'm in touch with Pragya. So we will have a plan in place once, Pragya also confirms the draft plan with the participants. So that is the way forward. This is all amazing news. I'm great to hear that you have made such strides already and you'll start collecting data on Sunday, which is very quick. So, congratulations for that. Thank And thank you, everyone, for being here and for willing to do this very important work with the adolescent girls in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Karnataka. You'll be working on a Sunday, so I hope you get all the rest and good sleep on Saturday. I'll try to work on Sunday too in solidarity. Um, That's but very if you sweet. want to brief them again, I am right here. If you have any questions, you can brief them again and I can be here. Or if there's anything that you would want from me, I'm here for that. Okay. And if So you don't have it an would be agenda, I nice. can just talk about the project. Right. So it would be nice to hear from you directly about the project while we have given them a glimpse of the project. But
I think when it comes from you, it would be very, very meaningful. Definitely. Is everyone okay with English? I can also speak in Hindi, Punjabi, Urdu. Yes, I think English and Hindi mixed would be fine. Okay. And for our South Indian brothers and sisters, if you have any problem, please stop me whenever you want, and I'll stop and I'll be happy to help make the translation. So my name is Ishita Arora. I have a PhD in psychology. I work at Yale University. I was born and brought up in India. And I think it's important to give a little personal context before we establish this professional relationship. That's why I'm sharing this. So I was born and brought up in Haryana, a very small town in Haryana, where I was not exposed to anything. But slowly I became more exposed and I made my way here. So when I got the project, the Girl Icon program, I met the girls. I saw myself in them because I was just like that, a girl in a village in a part of India where I didn't know anyone and no one knew me, and I didn't know what to do in life. And these girls were the same way. Um, and Milan Foundation seems to be doing amazing work with them. They are trying to teach them how to fight for their rights, how to identify discrimination against women, how to speak up for themselves, how to stop violence against women, how to get more education, how to apply for scholarships, how to keep themselves healthy, about their menstrual rights, sexual rights, all the things that we can think of, things that I expected to learn when I was their age and I could not because there was no exposure. They are learning that in very remote villages. And I'm so proud of what they have learned. I've met them several times. That's why this project is so close to my heart. Uh, so, what we'll be doing is we'll be assessing Milan Foundation. We are evaluating Milan Foundation to see how good the work is going on and what more needs to be done. Nothing is perfect. Neither am I, nor are you. Same with Milan. So we are just trying to learn that Milan Foundation had 4 or 5 outcomes related to education, health, gender discrimination, leadership, and girl empowerment. And we are trying to learn. Anshu, can you mute these? No, actually, ma'am, only the host can do so. Oh, I'm the host. If you are given the co-host, then yes, we really can monitor. Okay. Give me 1 minute. फाउंडेशन समझ में आ रहा है अरे अमेरिका भाषा लगाए हैं लगाए नहीं मीटिंग में समझा तो ये है मीटिंग तो हो जाता है So request you to mute yourselves if you are not speaking. अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो म्यूट कर लीजिए. हिंदी बोलो अगर आप म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को. सभी साथी म्यूट कर ले अपने आप को. म्यूट करो और थोड़ा हिंदी में भी अगर संगीता जी बोल पाएंगे इस्ता जी तो अच्छा रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल. जी, thank you. Okay, and Amritanshu ji, let me make you the co-host. म्यूट कर दो Okay, you're the co-host now, so you can control. Ishita ma'am, I have muted all for a time being, so you can start afresh after unmuting yourself. Thank you, Amritanshu ji. माफ कीजिएगा, मैं काफी तेज बोल गई. हिंदी में बात करते हैं थोड़ी सी. तो मैं अपने आप को उन बच्चियों में देख रही थी. That's why I wanted to do this. एंड हमारा काम ये है, हम सब मिलके ये देखना चाहते हैं कि मिलान फाउंडेशन ने इन बच्चियों के साथ जो काम किया है वो कैसा काम किया है. इट्स जस्ट एन एनुअल एग्जाम समझ के उसको बोर्ड का एग्जाम मान के हम ये काम करेंगे. एंड वी आर द टीचर्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लड़कियों ने जो सीखा है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में,
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, वायलेंस जो होती है, अत्याचार जो होते हैं वुमेन के ऊपर, उसके बारे में, बच्चियों की पढ़ाई के बारे में, स्कॉलरशिप्स, आगे जो करना चाहती हैं बच्चियां, क्या पढ़ना चाहती हैं, उनके पास पैसे है या नहीं, परिवार का सपोर्ट है या नहीं, हम ये सब जानना चाहते हैं ताकि हम देखें कि उन्हें और क्या चाहिए आगे जाके, क्या है ऐसा जो उनको और आगे बेहतर जिंदगी दे सकता है। That's what we are trying to understand. So जो questionnaires आपके पास होंगे उनमें कुछ 280 questions होंगे, 280 questions, जो इन सब चीजों के बारे में पूछेंगे, उनकी पढ़ाई के बारे में, menstrual health, sexual health, mental health, कि आ, वो उदास है कि नहीं, खुश है कि नहीं, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी बड़ी बात तो नहीं होगी जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती, स्मॉल थिंग कभी किसी ने उनसे नहीं पूछी होंगी, जो शायद वो सब चीजें हम पूछना चाहते हैं ताकि हम देखें क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनकी नीड्स हैं और कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। बट आई एम हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, आपको मुझसे कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। का कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए। Ishita ji, I'm Anup Kumar Bharti. I'm working as a professor in University of Lucknow, Department of Social Work. Basically, yesterday told me Sangeeta Anand ji regarding this project. So this is my one and two questions related to this project. Basically, what are the basically the objectives? What are the basic philosophy behind that? Why are you conducting this study with those work already done by the Milan education? So how do we linkages between the Yale University and the Milan and only they selected only the 3 states, not another states. That's a great question. Both of them are great questions. Thank you, Bharti ji, आपने question पूछा, and it's the first day for you, so welcome on board. मेरे को काफी महीने हो गए, I think 6 months almost that I have been connected with the project. And the project is not connected with Yale University as much as it is connected with me. I'm the only one at Yale who is doing this. But ये project connected hai. I am working with 2 universities. One is Yale University, another is Michigan State University. So I was hired by Michigan State University because my research is in adolescent girls population in India. मैंने 2011 से इंडिया में बच्चियों के साथ काम किया है एज अ काउंसलर, मेंटल हेल्थ, ऑल द क्वेश्चंस जो आप देखेंगे, ये जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चियों से, उन सब डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है बच्चियों के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। सलाम बालक ट्रस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है नई दिल्ली में, उसमें मैंने बच्चों के साथ काम किया है। सेव द चिल्ड्रन इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैंने काफी बच्चों के साथ काम किया है, स्लम किड्स के साथ, गांव में जाके। बिहार में काफी बच्चियों के साथ मैंने काम किया है। ये बच्चियां जिनकी 18 साल से पहली उम्र में शादी करवा दी जाती है, चाइल्ड मैरिज, and then forceful child marriage for most of them. So I worked with all of them, thousands of girls. So that's why I have this project, because I've been working in this field for 10 years now. And that's why. And Milan Foundation seems to only do this in 3 states, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Karnataka. What we are doing is called impact evaluation. What has been the impact of the Girl Icon program? क्या क्या उसका फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, हम आगे उस प्रोग्राम को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि और बच्चियों को ज्यादा हम हेल्प कर सकें. And that's what we are trying to do. And they only do this program in 3 states. They want to expand it to multiple states. But the science says, until you know, जब तक आपको पता नहीं है कि जो आप कर रहे हो उसका actually में कुछ effect हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको बढ़ाने का क्या फायदा? We don't even know what's happening if the girls are really getting the help that you want them to help. It's as simple as हम इंडिया में देखते हैं कि अंग्रेज लोग आते हैं, हाँ बाथरूम बना दो और सब लोग बाथरूम अपने आप चले जाएंगे. That's not how things work, right? They need to come to India, ask Indians what Indians want, how Yes. they want it, and then Definitely. deliver it.
So this is the same way we are trying to do. We don't want to feel that we know everything what girls want, because उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से बहुत अलग है, और हम कोई यहाँ पे ज्ञान के दाता नहीं जिनको पता हो कि उनको क्या चाहिए। तो हम बच्चियों से खुद पूछना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए? आपको पढ़ाई अच्छी हो रही कि नहीं हो रही है? आप घर पे सेफ फ़ील करती हैं कि नहीं फ़ील करती हैं? आपके पास सैनिटरी नैपकिन्स हैं कि नहीं हैं? तो ये सब चीज़ें पूछने के बाद हमको पता चलेगा कि बच्ची की ज़िंदगी में क्या है, क्या नहीं है और उसको क्या ज़रूरत है, और हम वो ज़रूरत कैसे पूरी कर सकते हैं। And that's why what all of us are doing is so important, because Yes. based on this study का आगे के 3-4 साल का हम पूरा विजन बनाएँगे कि इस स्टडी से हमने ये सीखा, और उस सीख के बेसिस पे हम प्रोग्राम में ये चेंजेस लाएँगे ताकि बच्चों की हम और हेल्प कर पाएँ। I hope I answered your questions. Yes, definitely. Because I'm asking this question because I'm working on this area. Uh, uh, I have one project with the government of the Uttar Pradesh, basically the violence against school-going girls. The entire UP, I have Wow. conducted a study and submit with the report within the 2 and 3 months. And already I have one project where basically working with the government of Uttar Pradesh, the acid violence against the acid attack survivors, and also with engaged with the GRIP project with the Bangladesh. So this is a very my interest area. So I'm really very proud feel today. I'm a part of this is a survey with the help of the Sangeeta Anandji and my student that I definitely will uh, conduct the in well manner this survey in the perfect manner, and the result will be definitely found drastically to change the life of the girls specifically. So that's my the question. So any questions with other people? I think ask to the But before you move on to questions, भारतीय जी क्या amazing काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगा सुन के। I think you and I need to connect separately so we can do more research and studies and find out about other girls and how we can help them. Definitely. I think they help us more than we help them. I'm sorry if I'm saying we should help them. हम कुछ नहीं है जो उनकी help कर सकें. I think they help us Yes. so much more. ये मुझे बहुत जान के अच्छा लगा है कि एक शब्द आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया कि हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। ये बहुत कम लोग ये बात को बोलते हैं कि टू अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन ऑफ द लाइफ, दैट इज अ रियलिटी। बिल्कुल, पढ़ाई से ये येल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से ज्ञान नहीं आता है। सही है। ज्ञान आता है जिंदगी जी के। So I think they know so much more. Yes, this is related to practical of life, right? Yeah. Yeah. संगीता जी आप कुछ बोल रही थी. I'm sorry I No, interrupted no, you. I just wanted to say that, Anupji and myself were recently we got to know each other, though UNICEF has been a platform with which I've been attached for the last 15, 20 years. But we met at a training where I was doing the training of these young girls, and was happy to know that a lot of them were contributing meaningfully to advocacy and research based projects. And that's how I thought of engaging with some of them, because they have a youth led advocacy platform in UP. And Anupi is the resource, is the nodal person for that. So That's wonderful. yeah. So और किसी का कोई प्रश्न है? Anybody else? और किसी का कोई? So नहीं मेरे ख्याल से नहीं। greetings, ma'am. Actually, I have got, you can say, a query in terms of, you can say, little bit in terms of going into the psyche of the person who is answering the questionnaire that we are administering to. जैसे अगर हम किसी से सवाल पूछते हैं, for example, a few questions, if you go through the questionnaire, right, definitely you yourself and your team has prepared it. So if you go, these definitely are a few sensitive issues. So, ma'am, actually, when I have been working personally in the field of STEM education, we do really work when we are going for something hands-on. We look at the gestures and the facial expressions also. Now, Yes. my question to you is that, for example, if a girl who is a teenager within the family, and if somebody from the family is sitting by the side while the questionnaire or the survey is being administered, so, for instance, in case of offline, I'm talking, if my surveyor is offline, will he have or she have the liberty to mention somewhere? Because if the girl is, you can say, not saying 100% truth, the gestures or the facial expressions or the tonal quality will
tell that somewhere down the line that it's not 100% perfect, that's being told. So will the administrator, the person who's administering the server, will have the you can say freedom to mention the change in the tonal quality, the gestures, so that a little bit of honesty can be reviewed to you as well. And then how do you take this as a regard that this works, this might work well for offline, या offline के लिए काम कर सकता है, लेकिन while online, तो online में आप फैमिली पास में है, ये मैंने सवाल मान लीजिए पूछ लिया, लेकिन how do I know that 100% candid answers are coming out somewhere from the heart? That's an amazing question, Amritanshuji, and we will not. That's the problem, that we can't really know 100%. We can rely on their word, right? We can ask them. I have added the question. Let me quickly share it. It's here. We are asking them the very last question. Can you see this? 280? You can Yes. increase the size. So this is specifically for the researcher. Is anyone around the participant while the interview is being conducted? कोई उनके साथ है जब ये उनसे बात की जा रही है? Yes, no, don't know. Plus, I leave here space for whoever is conducting the interview to write their comments. Your own personal comment. अगर आपको लग रहा है कि पूरे इंटरव्यू के टाइम पे बच्ची काफी हिचक रही थी, please write about it because that will help me. राइट क्योंकि आप अभी इस प्रोजेक्ट के आंख और कान हैं ग्राउंड पर सो आपको जो फील हो रहा है आई वुड टोटली ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स ऑन दैट बिकॉज व्हेन आई टॉक टू द गर्ल्स लेट मी स्टॉप शेयरिंग व्हेन आई टॉक टू द गर्ल्स देयर पेरेंट्स वर राइट देयर एवरीवन दादा दादी मम्मी पापा बहनें भाई सब लोग वहीं पर थे जब मैं उनसे जूम पे बात कर रही थी सबसे मैंने नमस्ते पाए लागू कैसे हैं सब किया एंड दैट इज फाइन व्हेन आई एम मीटिंग विद देम बट अगर वो आपसे पूछें आप उनसे सवाल पूछें कि क्या आपके पिताजी आपकी मम्मी को मारते हैं और पिताजी साथ में बैठे हैं तो बच्ची कैसे आंसर देगी नहीं दे पाएगी ना तो उस समय में बच्ची जो भी आंसर दे आप उसको लिखिए बट एंड में यू विल हैव द स्पेस टू राइट योर ओन फीलिंग्स कि आपको क्या लगा कि कुछ हिचक थी ज्यादा कुछ था और आप अपने आप भी पूछ सकते हैं कि आसपास अगर कोई है तो you can have a code word maybe for the girl, right? If she seems scared, I don't think they will be scared. हमारे दो ग्रुप्स हैं देखिए 500 बच्चियों का एक ग्रुप है और 900 बच्चियों का एक ग्रुप है ठीक है जो 500 बच्चियों वाला ग्रुप है वो बहुत कॉन्फिडेंट है वो मुझसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम वो आपसे ऐसे बात करेंगी जैसे दे आर रूलिंग द वर्ल्ड एंड दे विल रूल द वर्ल्ड इन फ्यूचर दे आर डूइंग सो वेल मगर जो वो 1000 बच्चियों का जो है ना वो बच्चियां हैं जिनको ट्रेनिंग वो 500 बच्चियों से मिलती है उनको डायरेक्टली गर्ल आइकॉन प्रोग्राम से ट्रेनिंग नहीं मिलती तो वो बच्चियों में अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है हर गर्ल आइकॉन जो है उसको ये सब 18 महीने की ट्रेनिंग मिलती है और वो बच्ची फिर आगे 20 बच्चियों को जाके सेम ट्रेनिंग देती है हर हफ्ते तो जो गर्ल आइकॉन है दे आर डूइंग रियली वेल उनके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बट जो पियर्स हैं जो 20 बच्चियां हर लड़की की दोस्त हैं तो टोटल 1000 गर्ल्स जिनसे हम मिलेंगे उनमें ये हिचक हो सकती है तो आप बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते फोन पर मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ दैट्स वाई आपको कुछ हिचक समझ आए आपको लगे कि बच्ची कहीं पर कुछ ज्यादा रुक रही है देयर इज अ लॉन्ग पॉज समवेयर सो यू विल हैव अ होल लास्ट क्वेश्चन जस्ट for your feedback for what you think about this particular interview and because we have limitations right we can't really go to each girl's household I wish we had that money I don't have that money so we can't really do that तो इसलिए हमें फोन पे करना पड़ेगा और we will write this as our limitation hopefully when this report is done and presented to big funders like Bill and Melinda Gates Foundation and this and that they will give us enough money that next time we can go to their homes and talk to them घर पे बैठ के चाय पी के one on one I hope this makes you feel comfortable that even though you're doing it on phone, you can still do justice to the questions. मैम टाइमिंग क्या है? किसकी यहाँ की? नहीं मैम सर्वे करने की। सर्वे करने की टाइमिंग 19 से 29 के बीच में। अमृतांशु 1-on-1 आप लोगों से कनेक्ट करेंगे। अभी तो बहुत जैसे मैंने अभी 9:30 बजे 9:15 बजे जो कॉल एंड हुई है उसमें मैंने बताया कि
क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो निटिक्रिटीज हैं, डिटेल्स हैं, आपसे सब डिस्कस की जाएंगी। संडे को हम लोग शुरू करेंगे और होपफुली इस महीने के अंत तक हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। हर बच्चे को हर सर्वेयर को 2 फॉर्म्स करने हैं एक दिन में, ठीक। और उसके भी टाइमिंग्स हम लोग फील्ड से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपको बताएंगे। हमको बस ये ख्याल रखना है कि इन बच्चियों से बहुत ओके मैम। सेंसिटिव हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हम ऐसे पूछें जैसे हम अपनी भांजी, भतीजी, अपनी बेटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपनी छोटी बहन से। Yeah. So, And okay. So we can have a sample survey with our family members. That's good before going to the real survey. So that's what I want to share. Actually, talk to my daughter. She told, okay, some questions are comfortable, some questions are, it's not so easy to answer. yes, Yeah. So, being she's an actually a B graduate, she can tell, but for others, so we have to see. So sample survey I have to do. Then we will Yeah. start from Sunday. yeah. I totally agree with you, Ravi Shankar ji. I was there till I was in India till I was 24 years old. If you would have asked me at the age of 24 and some of these questions, I would not be comfortable Yeah, that's what. because no one talks to us about these things. Yeah. And I think that's the problem, that people don't talk about where to get a menstrual pad, where to They get don't know. contraceptives. Yeah. If I'm feeling suicidal, no one talks about this. And because of the secrecy of this thing, problem becomes larger. Yeah. Right? Especially violence in the home. If you That's are what. getting discrimination, all of those things we in our culture tend to keep private. And because of that, the problem increases. No one can help because no one knows. And so I totally understand that these questions are very sensitive and people हाँ might not be comfortable. But I can तो assure you बता the हम का करे 500 girl अगर icon, चला दे बता हवा खबू भाई रोवे लगू। Okay. Yeah. So you Somebody. can mute her. Yeah, thank you. I can assure you the 500 girl icons will be so confident in answering those questions. I was blown So, away when I talked to them about all of those questions. I sort of field tested it with them. They were very confident. They'll ask easily, they'll answer easily. But the 1000 girls, they might not. And that's what we want to know, that how we can make them more confident about these questions and help them with that. that's what I want to know. If they answer, if they can't answer instantly. So if they want to answer sometime, if you want to take sometime when they can answer, can you go for second survey? Means after Uh, sometimes, can you go with so them? the question is, if they don't answer all the questions, Oh yeah, yeah. Some questions they could not answer at that I time. have a question. Kanchanji, 1 minute. I'm talking to Ravi Shankar ji. I'll answer his question and See, then I can come back to see, you. some questions they could not answer instantly. So they want to Inst- answer after some time. So they want to think. Suddenly they can't say because all the 600, 500 or 200 odd questions. So that time, so can you go for a second interview? Means after giving some time, can you go and ask the question? That's what I want. I'll let So, Sangeeta okay. ji answer that. Okay. Yeah. So also, you know, out of experience, I'm telling you, it is difficult to get timings from these girls. Yeah. And so, you know, if you talk to them at a stretch, it is more advisable to spend more time in the first round only, make them comfortable, make them feel good, make them that, you know, give them that space to be able to communicate with you, but do it in the first round only. Unless and until, of course, there is an emergency and the child has some problem, some issue. Otherwise, you know, it becomes again 2 hours, and then you Extra. want to again take 2 hours. It's a long questionnaire. So if you want to repeat the entire exercise, I know. Oh, hard like. No, I completely Yeah. understand the space you are coming from. Ishita Ravi Shankar ji has translated the entire questionnaire for us, Wow. Kannada, and he is also the resource person, the nodal person for Karnataka, and there are people recruited under him who will be administering the survey. So, and he was the first one without even saying.
He spoke about the survey, every question with his wife and then with his daughter. So he's very passionate, and he said the same thing, that these questions have never been asked. These Yes. questions, so nobody asks these questions. So I Yes. think, and Amritanshu and myself were talking the same thing. If this, research comes through, I mean, I'm, I'm a veteran in the field, but believe you me, I have not seen survey forms with such questions. Even if it was related to mental health, we've done a lot of work with SIPSA and a lot of research with them, but none of these questions are so simply and so directly. Yeah. इतना simple और इतना direct questioning है. It doesn't hurt anywhere. It doesn't, So yeah, it's very, the way you put it across, I think I'm learning something out of that. So I think that is a very, very commendable thing that you have done. A very, and fingers crossed, by God's grace, if we are able to, do it successfully, I think upar wala bas kare that you will be able to get good results. बिल्कुल Sure, भगवान sure. की कृपा के सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता. So I hope that God's grace is with everyone. Yeah. But I agree with you. And I think one of the reasons I was so passionate about getting these questions across is हमारी गवर्नमेंट ने बच्चों से questions पूछना बंद कर दिया है. There was a time we had National Family Health Survey where you would ask questions from people starting 15 years of age. But since 2022, 2 साल पहले से गवर्नमेंट ने 18 साल की छोटी उम्र के सब लोगों से क्वेश्चंस पूछना बंद कर दिया है. They've stopped asking the questions. So how will we know if we don't ask them what they are going through? And that's the reason. And I think I'll learn from you. When you are on the field, you are talking to the girls and you see some questions are hard, some questions might be rude, some questions, then I want you to tell me, give me feedback that Ishita, that did not work, and I'll change. So I would just need your honest feedback. This is a bi-directional relationship. I'm helping you, you are helping me, and I'm very open to feedback. If you tell me that something is not working, I will change it. Because again, you are the experts on the ground. I'm just sitting somewhere. I wish I was there. I really wish, but I can't be. You are the experts on the ground. I will take in your feedback, whatever you tell me. Based on that, we can go from there. But I hope the girls can answer these questions. Sangeeta ma'am, there are a couple of clarifications that are being sought by the participants in the chat box. Sure, One sure. is by Harshita, and with regards to some mock interview, she just wants to a clarification that whether it's essential to complete a mock of each category. Amritanshu, Yes, can ma'am. we take Kanchan's question first, because she Oh, had asked first, and then sure. Then, okay, sure. Yes. Kanchan जी, आप अपनी बात कह सकते हैं? मैम ये मैं थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन है बोलने में, तो हाँ. मैं इतनी वोकल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोग जो आप लोग बहुत एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो, मेरे पास इतना नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहूंगी, उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चंस हैं. मैंने अपना यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली, तो मैंने चीजें की हैं अपनी ये वाला, और मैं इन चीजों में वर्क करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि लोग बोल नहीं पाते हैं, वोकल नहीं होते हैं, और जो उसमें क्वेश्चंस हैं वो बहुत हार्ड हैं. तो कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो क्या क्वेश्चंस है. आप उनसे पूछोगे ना तो वो बोलेंगे क्या, इसका मतलब क्या होता है? उनको मतलब ही नहीं पता है. इतने हार्ड क्वेश्चंस हैं वो. ये यूपी है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं है. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बोलूँगी कि बहुत एजुकेटेड लोग हैं. ये वाला हम कहते हैं कि दिल्ली 10 इयर्स आगे है हमसे इस चीज़ में. बट अगर हम क्वेश्चनिंग पूछेंगे लोगों से, क्योंकि बहुत गाँव से लोग आते हैं, बहुत छोटे कस्बों से लड़कियाँ आती हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, उनको नहीं पता है. उनको बस लाइफ़स्टाइल पसंद है. उनको ये नहीं पता है कि वो चीज़ क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो क्या वो 100% जवाब देने के लिए रेडी होंगी? और अगर हम ये सर्वे कर रहे हैं और अगर हम उस चीज़ तक नहीं पहुँच रहे हैं, उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे वो चीज़? तो मुझे प्लीज़ आप बताओ। इशिता के जवाब देने से पहले बस एक छोटी-सी बात ये कहना चाहती हूँ
कि ये जितनी बातें हैं आप ज़रूर पूछिए और उसके बाद भी आपके सवाल होंगे तो वो भी जवाब दिए जाएँगे। लेकिन मैंने जैसे कहा अपनी लास्ट वाली ट्रेनिंग में भी आप जो 15-20 मिनट में जो ब्रीफिंग ट्रेनिंग नहीं बोलूँगी, ब्रीफिंग थी कि आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग 2 ढाई घंटे का एक कॉल रखेंगे और ये सारी सेंसिटिविटीज़ दीज़ आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स जो आप पूछ रहे हैं ना, ये चीज़ें हम लोगों ने महसूस करी हुई हैं फील्ड में, है ना? ये क्वेश्चन अगर सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछेंगे ना, तो आपको भी थोड़ा-सा समय लगेगा उसको जवाब देने में। तो इतना नहीं है ये like जादू I'm gone through na, that's why I'm asking. हाँ, हाँ। तो That's ज़रूर why इशिता I'm जवाब देंगी, लेकिन हम लोग भी आपके साथ वन ऑन वन भी बात करेंगे इस पे। इशिता ओवर टू क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग टू पेट्स, हम नहीं बात करते अपने घर में, आज भी नहीं करते। तो मतलब हम वो है हमारा क्राइटेरिया कि हम नहीं बात कर सकते इस चीज के बारे में। जबकि बहुत ही ये तो मेंस्ट्रुअल हाइजीनिंग के बारे में आप क्यों नहीं बात कर सकते हो? आप बोल सकते हो ये वाला। बहुत बेसिक छोटी सी बात बोलूंगी कि मतलब पैड्स लोगों को रैप करके देते हैं लोग। भाई ऐसी क्या दिक्कत है पैड्स रैप करके देने में लोगों को? तो ब्लैक ये मुझे पॉलिथीन में, काला पॉलिथीन के अंदर, ताकि किसी को हाँ पता ना चले कि शी इज पेपर ऑन में कि भाई पीरियड्स। अरे बिल्कुल एक एक ये तो मेडिकल प्रॉब्लम सबको होती है, सबको पता भी है, फिर भी रैप करके दे रहे हैं। मेरे को इस चीज से थोड़ा सा मतलब दुख है कि क्यों मतलब बिल्कुल, इतने मतलब हम इतने आगे, हम साइंस की बात कर रहे हैं, हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं, हम पैड रैप करके दे रहे हैं, हम इस चीज पे बात नहीं करते हैं, हम पूछते नहीं है। हम पैड अपने किसी कोई मैन पर्सन होता है अपने घर में तो उससे नहीं मंगा सकते कि भाई हमें इमरजेंसी है, हमें पैड ला के दे दो भाई, ये वाला हम इस Kanchan, चीज पे Kanchan, क्यों just नहीं I बात stop करते? you. Kanchan, uh, I'm या Anup सर Kumar Bhartia speaking. You have raised a very relevant question. मगर नजरिया लोगों का बदल रहा है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और हम लोग जो सर्वे कंडक्ट कराने जा रहे हैं उसका बेसिकली पर्पज ही यही है। इस चीज को समझने की ओके कोशिश करिए, ठीक है ना? जैसे आप कह हम्म रहे हो कि नहीं बदल रहा है, मेरी बेटी क्या 11th क्लास में पढ़ती है, मैं उसको सामने भी पढ़ रही है, मैं उससे पैड की बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि उसको डाउन कब होती है, उसको पैड की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, ऐसे पेरेंट्स होने के नाते तो बहुत ओ सारी ये चीजें तो बहुत ओपन है, अच्छी बात बात है हो रही ये, है। तो मतलब मगर अच्छा ये लगा सबसे अच्छी ये। चीज ये है कि जो चीज बेसिक पर्पज जो इसका है सर्वे कंडक्ट करने का, उसका पर्पज ही यही है कि जो चीजें हम लोग में हिडन चीज पड़ी हुई है सामने निकल करके आए, हम लोग चीजों को अपने को कह लीजिए कि एक्सप्रेस कर सके, एक्सप्रेस करने के बाद में जो भी प्रॉब्लम निकल करके आती है उसके ऊपर भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनेगा, ठीक है ना? तो ये ओके आपके सर सारे क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि जब ये सर्वे कंडक्ट करेंगे आपको सारे के सारे आंसर अपने आप मिल जाएंगे और हाँ बहुत जमाना बदल रहा है। तो ज्यादा क्वेश्चंस गीता जी कर दिए। बता रही हैं जो आइकॉन गर्ल हैं, आप उनसे बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उनसे बात करके। हाँ, दे आर मोर फ्रीक्वेंट। मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर दिए उसके लिए आई एम सॉरी बट नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, यू आर रेज वेरी संजय वेरी प्लीज रिलेवेंट डोंट से क्वेश्चन, सॉरी, इसका आंसर मैंने देने की कोशिश की। यू डोंट सॉरी हैव टू टू से डिस्टर्ब यू, मैं सॉरी। बीच में आ गया। हाँ नहीं नहीं, बट बिल्कुल भी नहीं। सब लोग क्यों नहीं बात करते हैं इस चीज में? Kanchan ji, I can feel your frustration. You know, I ओके have the same frustration. I think any woman born in India will have the same frustration. We'll all have the same frustration. दैट्स So I totally understand your frustration and I मैम totally agree with you. Uh, थैंक यू मैम, थैंक but यू सो I मच। will say that this is the reason we are asking the questions to change the culture so people feel more comfortable. But again, specifically from a research perspective, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, आपने criminology में पढ़ाई की है, आपने मुझे बताया, यस मैम, यस मैम। तो आपका स्पेसिफिक कोर्स वर्क क्या क्रिमिनोलॉजी के अंदर था? बेसिकली क्रिमिनल्स के बारे में था, फिर मैंने फिंगरप्रिंट किया और फिर उस चीज के लिए मतलब फिर मुझे लगा कि लोग इतनी छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं बात करते। हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम सब इतनी चीजें कर रहे हैं, हम पेट्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हाइजीन के बारे में बात नहीं कर रहे। मैंने कुछ लोगों से बात की तो उनको पता ही नहीं है कि मतलब कैसे मेंटेन करेंगे क्योंकि हाइजीन। आपने जो पढ़ाई की क्रिमिनोलॉजी में और फिंगरप्रिंट्स में, अगर आप वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे नहीं पता होगा, बिकॉज आई हैव नॉट नॉट दैट कोर्स, राइट? मैंने वो ओ पढ़ाई नहीं की, तो मुझे नहीं पता होगा। मैंने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाई की है, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया। मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगी, आप बहुत एजुकेटेड हैं, मगर आपको नहीं पता होगा, हाँ right? मैम। The thing is, these दैट girls have received education in this. They have a whole curriculum. 18 महीनों की उनका पूरा कोर्स हुआ है, उन्होंने पढ़ाई की है इस चीज के ऊपर, और उस करिकुलम के बेस पे मैंने उनसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं।
सो 18 महीने से बच्चियाँ इस सब के बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने पढ़ा है कि मेंस्ट्रुअल पैड्स कहाँ से आते हैं, फर्टिलाइज़ेशन ओवम और स्पर्म का कैसे होता है, लड़कियों में अगर उदासीन हो तो कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, घर में अगर औरतों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हो तो कौन-सी हेल्पलाइन नंबर को कॉल करना चाहिए। ये उनका कोर्स वर्क था। और अगर उन्होंने कोर्स वर्क में ये सब पढ़ाई की है 18 महीने में, then they would know about it. That's what we expect. So it's just like an exam. आपका क्रिमिनोलॉजी का कोर्स वर्क आपने जब पूरा किया उसके बाद आपका एग्जाम हुआ फिर आपको डिग्री मिली उसके बेसिस पे। इट्स द सेम वे फॉर दैट। तो आम जो गांव की लड़कियां हैं वो शायद ना समझ पाएं और ना बता पाएं क्योंकि उन्होंने ये कोर्स वर्क किया ही नहीं। मगर इन बच्चियों ने ये कोर्स वर्क किया है। इसकी वजह से उनका सॉर्ट ऑफ एग्जाम हो रहा है देखने में कि उन्होंने कोर्स वर्क में जो पढ़ाई की वो उनको क्या-क्या समझ Okay, okay. I, thank you for answering me. Thank you, ma'am. Thank you so much, all of them. बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। Okay, Amritanchu, now you can take एंड जो अपना फ्रस्ट्रेशन है उसको जागरूक रखिएगा, मैं तो हमेशा ही फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ। Okay, ma'am. Okay. Thank you. Okay, chat के questions हम लोग ले सकते हैं। Okay, sure, ma'am. So, Ishita ma'am, the first question is regarding clarification. I think Sangeeta ma'am can answer this because this point was raised by Sangeeta ma'am, that Harshita wants to seek a clarification with regards to the mock test. That whether one mock has to be done for peer and girls or just only one mock of either category. So both, we said both. So that means every participant should be able to do one mock for peer and one mock for girl icon. Okay, sure. So, Harshita, I think your query is satisfied. This is for that level of understanding, and so that you bring within your tonal quality of asking the question something, some sort of a word which is known as empathy while dealing with the girl icons as well as the peer members. Now, before we take the question of Akanksha ji, Huh. I'm just taking the second query by Sakshi ji on chat. She has asked if there is no possibility to connect with the girl on call, then what are we going to do? हाँ, तो these are all questions we can take later, but since you raised it here, तो मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप नहीं कॉल कर पा रहे, हमने ये तय किया है कि हम एक बच्ची को कम से कम 5 बार तो कॉल करेंगे और डेली अपडेट्स में उसका रीजन भी डालेंगे। इज द कॉल नॉट गेटिंग थ्रू, उसके लिए कोड्स भी हमने दिए हैं, 1 2 3 4 5 कोड्स, तो आप उसको कोडिंग डाल सकते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट कनेक्टिंग? बच्ची अवेलेबल नहीं थी, या कॉल नहीं लगा, या नेटवर्क नहीं था, वॉट एवर इज हैपनिंग। एंड देन 5 बार अगर नहीं होता है तो फिर देन अगेन आफ्टर 2 days 3 days फिर से एक बार ट्राई करेंगे। अनलेस यू कंप्लीटली गिव इट अप तो उसको फिर हम ऑफलाइन करेंगे। ठीक है? Sure. So thank you, Sangeeta ma'am, and I hope your query is satisfied. Now, I think Akanksha Mishra had raised her hand. Akanksha, if you can unmute yours. Avantika, sorry, Avantika Mishra had raised her hand. So Avantika ji, if you got any query, the stage belongs to you. गुड इवनिंग सर, माय नेम इज अवंतिका। सर मैंने इससे पहले भी कोविड में ये वर्क मैं कर चुकी हूँ। सो मुझे लगता है कि इसमें सबसे पहले इतना अच्छा कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनसे कि उनको पहले अच्छा फील हो, वो Correct. हमारे साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए, मतलब तभी ये फॉर्म हम फिल कर पाएंगे। अगर एकदम मतलब क्वेश्चन बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हम उनसे मतलब उनके वो कंफर्टेबल फील ही नहीं करेंगे। हाँ, तो वो उसके लिए हम लोग प्रॉपर आपको ज़रूर बताएँगे, क्योंकि कैसे कन्वर्सेशन इनिशिएट करना है। बल्कि अमृतांशु और मैं हम लोग तो ये बात कर रहे थे कि ना केवल बताएँगे बल्कि एक कुछ लिख के भी देंगे कि डूज़ एंड डोंट्स, कुछ आपको ये भी बताएँगे कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें, फिर क्या करें। अगर ऐसी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी एक हम लोग बना देंगे आपके लिए, कि जैसे जो-जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, ऐसे कौन-कौन सी ऐसी परेशानियाँ हैं जो आ सकती है, जिसकी हमको लगता है कि बात करने में ये दिक्कत आ सकती है, तो ऐसी दिक्कत आए तो फिर क्या करेंगे आप, है ना? तो ये सब चीजें भी हम हमारे दिमाग में है कि इसको जल्दी से कल हम लोग बना करके आपके साथ इसको शेयर करें। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके जो इमीडिएट
सीनियर लोग हैं जो आपके नोडल पर्सन्स हैं जिनके माध्यम से आप रिक्रूट हुए हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। और अगर उनको भी लगता है कि अभी भी परेशानी हल नहीं हुई, तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास रहेंगे और अमृतांशु इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो आप उनसे निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। जो हमारी ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, उसमें हम आपको सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। Sangeeta ji, is it possible to make like a WhatsApp group with everyone in it so people can ask questions? I can also be a part of it and answer. We've already made some WhatsApp groups. Amritanshu will tell you. So Amritanshu, over to you now. Why So don't you actually, we had made at the moment we are operating with the different WhatsApp groups with the different nodal people who are coordinating. So now because we just were waiting for this orientation come interaction meeting, so that now all people get you can say used to what they are going to do. कि वो करने क्या वाले हैं। इसके बाद नाउ व्हाट वी प्लान टू डू इज कि हम लोग सभी को पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करके एक कह लीजिए सेंट्रल व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का प्लान कर रहे हैं कि जिसमें सभी की क्वेरीज सेंट्रली एडमिनिस्टर की जा सके, सभी लोग अपनी क्वेरीज को सबके सामने रख सकें। सो आफ्टर टुडेज मीटिंग वी आर जस्ट ऑन टू दैट पाथ कि मैं सभी लोगों का सभी नोडल जो मेंबर्स हैं उनका मैं फीडबैक ले लूंगा, क्योंकि आज की मीटिंग के बाद एक मेरा फीडबैक लेना ये भी हम लोगों ने सोचा है कि नाउ आफ्टर दिस हाउ मेनी पीपल आर रियली इन द बस फॉर द सर्वे एंड हाउ मेनी पीपल दे आर जस्ट बैकिंग ऑफ। सो नाउ हु आर विद अस वी विल मेक अ सेंट्रल व्हाट्सएप ग्रुप एंड देन यस डेफिनेटली वी विल ऐड यू आल्सो एज वेल। बिल्कुल, जो भी इस कॉल पे हैं, to feel comfortable, Avantika, you'll have my email ID, you'll have my phone number. अगर कुछ भी emergency हो, Sangeeta ji is out of reach. I know she works so much. Oh my God, she's working day and night. If she's out of reach, not available, but I am there. You can ask me that question. So I want my contact also to be with you. We are all a part of the team. So if you have questions, come to any of. I'll talk to a woman. You can talk to Krati here. I can see Krati, Sangeeta ji, me, or any other woman that you feel comfortable asking. I'm sharing my email address here as well with everyone. Please feel free to email me. विद्यांशु जी मेरे को WhatsApp ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पर आपको मेरा नंबर भी दिखेगा, तो आप वहां पे भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। So thank you so much, Ishita, for being so open and so candid about everything. बिल्कुल, आई थिंक अगर हम बच्चियों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ओपन और कैंडिड होके हमको ये सब जवाब दें, सो आई थिंक वी हैव टू बी दैट विद ईच अदर एंड आई रियली appreciate how your team has asked such difficult questions but very poignant, because they seem like they know what's going on the field and they're asking those questions already before facing them. So I really appreciate that. Very insightful. तो आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस और नंबर दोनों है, आप उन सबको सेव कर लीजिए एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डे और नाइट का कुछ फर्क हो सकता है क्योंकि मैं आपके दिन के समय सोती हूँ यहाँ पर नाइट पे, बट एज सून एज आई वेक अप आई विल रिप्लाई टू योर मैसेज। Any other questions for me right now? Any clarifications? और किसी का कोई प्रश्न? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है संगीता जी। ओके, तो संदीप जी, श्वेता जी, अनूप जी और रविशंकर जी, Yeah. संजय जी, thank you so much for being a थैंक part यू, of थैंक this यू। this interaction and और आपके participants ने भी participate किया। हम लोग 1-to-1 एक करेंगे जो detailed understanding होगी। आज तो बहुत brief meeting थी। I didn't want to postpone the meeting with Ishita because ये होता है ना, फिर और आगे और आगे और आगे, already ये थोड़ा delayed चल रहा था। तो इसीलिए आज की मीटिंग हम लोगों ने रखी, क्लोज करी इसको। और आगे जो हम लोग करनी है वो एक डिटेल 2 घंटे का सेशन हम लोग रखेंगे
और जैसे आपने कहा इशिता ने कहा कि हम लोग सब अवेलेबल होंगे अगर कोई भी इस तरह की दिक्कत आती है, बट आई एम श्योर जितने हमारे हेड्स हैं दे आर ऑल वेरी केपेबल। आप लोग सब काबिल हैं और हर तरह से सपोर्ट करेंगे अपनी अपनी टीम्स को। एंड आई थिंक वी आर वेरी वेरी प्राउड इशिता दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस रिसर्च। और मुझे लगता है कि ना केवल मैं बल्कि जितने लोग आज जुड़े हैं इस आपके साथ इंटरेक्शन में, सब बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे कि इस तरह की रिसर्च में जुड़े हैं, है ना। और कहीं ना कहीं समझिए कि एक बड़ी तस्वीर में अगर कोई बदलाव लाना है तो पता नहीं कौन सी रिसर्च की फाइंडिंग्स कहाँ जा करके हिट करे और कितने बिल्कुल लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए, ये आप समझ भी नहीं सकते। एंड देन यू विल से वन डे आई वाज part of this particular research, you will be so proud. So इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से जुड़े। केवल 10-12 दिन की बात है। इस 10-12 दिन में अगर हम पूरी तरह से जुट जाएंगे और पूरी निष्ठा से काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो बहुत सारा सहयोग आपसे अपेक्षित है। और कहते हैं ना कि मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है कि जिस अनुपात में हम जैसा भी सृष्टि को देता है उसी अनुपात में हमको वापस भी मिलता है। आज यूनिसेफ की कुर्सी छोड़ने के बाद समझ में आ रहा है कि लोगों का कितना प्यार है। शायद कहीं कोई रिश्ते बने थे और शायद वही स्नेह वापस आ रहा है। सो इन्हीं शब्दों के साथ इशिता, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम and for all that support. And you know, the first thing that I had seen when I got your email, Ishita Arora, it reminded me of my maiden name, Sangeeta Arora. So I oh so I said, okay, she's a Punjabi. So that's not to say कि caste system में कर रही हूँ, बट आई थॉट येल यूनिवर्सिटी में कौन पंजाबी बैठा है जा करके काम कर रहा है इस वाली स्टडी पे। सो एनीवेज, but thank you so much. my And mom's name was Sunita Arora, so it's very close. I have a masi called Sangeeta, so okay, it's all the same. That's why my name is Ishita Sunita Arora. okay, okay, Bilkul, I totally agree with all of you. Thank you so much. If you want to meet again, I am here. I am sure, so happy to meet all of you today, but I'd be happy to do the same kind of meeting again. sure, sure. Thank you. And I'll be Thank you. here for Thank you, anything you Ishita. might Thank you. need. Thank you. Thank you very Thank much. you. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Take care. Thank you so Thank you, much. Sangeeta ji. Thank Thank you. you. Thank you. Thank Thank you. you, Ishita ji. Thanks all the coordinators and thanks our patrons. Thanks all our people, all our surveyors and researchers. Thanks a ton. Bilkul, because I can only write all of these questions, but you are the main people who are going to make this study a success, hopefully. Absolutely. Thank you, Ishita, for all your time and Thank for you so much, Sangeeta such ji. a wonderful interaction. Thank you. I hope it was helpful, and I am ready for another interaction whenever your team wants it. Please Very resend me well. that email. Sure. Thank you. All right.